Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying one more interesting poem, that is Radhas. So let's just begin with this poem. What is Radhas about, right? And as we all know, Radha का मतलब क्या रहता है? इसको छोड़ के इसके अलावा, right? Rather of doing this, instead of doing this, you can do this. So this is the grammatical meaning of this word, but we don't know that what this poem is about. Let's just read and know what this poem is about. So the title of our poem is Rather, right? So about this poem, this Mary Hunter Austin, he is the author of this poem. ये कौन है? ये इनके author हैं, जिनका नाम है M.H. Austin, right? And she was an American writer who wrote about Native American culture and social problems. See, she belongs to US, right? ये कहाँ से belong करती है? USA से belong करती है, जहाँ पे डॉलर चलता है, अमेरिका, right? एंड अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पे डॉलर चलता है, राइट? शी इज एन अमेरिकन एंड ऑफ कोर्स शी इज अ नेटिव पर्सन ऑफ अमेरिकन। तो ये हमेशा नेटिव नेटिव मीन्स उस जगह पे बिलोंग करती हैं। अमेरिकन कल्चर और उनकी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में she used to write, right? So she is best known for her tribute to the deserts of California. तो the deserts of California को बहुत ही ज़्यादा ये indicate करती हैं। And California again, it's in US, right? And this poem describes the poet's dream animal if she weren't a human, right? This poem is telling कि अगर वो एक एनिमल होती है एक ह्यूमन की बजाय, राइट? शी ड्रीम्स, द पोएटेस ड्रीम एनिमल, एनिमल को ड्रीम करती है इफ शी वांट अ ह्यूमन, अगर वो एक ह्यूमन नहीं होती तो वो क्या होती? एक एनिमल होती। तो दिस इज रादर, ये ऐसे रादर है। एंड दिस पोएम रिवील मीन्स टू शो that the poetess dislikes about doing homework or sitting at her desk, कि अपने घर में बैठ के डेस्क पे काम करना, होमवर्क करना, she does not like this. Reveals means to show, like का opposite dislike, right? So let's just begin with this poem. So I know very well what I had rather be. I know कि मैं क्या हो सकती हूँ. I had rather be if I didn't always have to be me. अगर मैं हमेशा वो नहीं हूँ जो मैं हूँ आज, I would rather be an owl. और मैं क्या हो सकती हूँ? एक owl. देखिए vowel है इसलिए इसके पीछे an लगा हुआ है, right? A downy feathered owl. A downy feathered owl means जिसके जो हमेशा क्या रहता है एकदम kind of, you can say a downy feathered owl means the always who is like very calm, right? A winged blinked yellow eyed owl जिसकी eyes कैसी हैं? येलो कलर की हैं। इन अ होल इन अ हेलो ट्री ऑन अ hollow tree में मेरा क्या हो? एक घर हो। आई हैड टेक माई डिनर इन अ चिप मंक टाउन, और मैं अपने डिनर कहाँ करती? चिप मंक टाउन में। एंड वुडंट आई गॉबल द फील्ड माइस डाउन, एंड आई वुड नॉट हैव गॉबल, गॉबल मीन्स फटाफट चीजों को गॉबल करना, द फील्ड माइस डाउन। एंड इफ आई वर अ विंगटी ब्लिंकटी owl, and again if I am an owl or an animal and didn't always have to be me, कि जो मैं आज हूँ वैसा नहीं होती। I know very well what I like to do. मेरे को ये पता है कि what I like to do, क्या करना मुझे पसंद है। If I didn't have to do it, what I do means मेरे को वो भी नहीं करना है जो मैं कर रही हूँ, वो मुझे नहीं करना है। I had go and would be a woodpecker. I had been a woodpecker. Woodpecker is a bird who makes their nest with the help of his beak, right in woods. A rapty red headed woodpecker, जिसका हेड कैसा है? रेड कलर का है। इन द टॉप ऑफ अ टॉल ओल्ड ट्री, बहुत बड़े पुराने ट्री पे खड़े होकर वहां पे मैं रह के अपना नेस्ट बनाती है। आई हैड नेवर टेक अ लुक मीन्स कभी चीजों का इतना ध्यान नहीं देना एट अ लेसन और अ बुक, की आई हैव नेवर टेकन अ पॉइंट ऑन अ लेसन और यू कैन से बुक। आई हैड स्कोर लाइक अ पिराट ऑन दी sea, like a pirate on the sea, who can be, I would have scold, मतलब मेरे को उस तरीके से स्कोल किया। हु इज अ पायरेट? पायरेट वो होते हैं जो चीजों को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। लाइक यू कैन से द रॉबरर्स और यू कैन से द हंटर्स, राइट? एंड इफ आई ओनली हैड टू डू व्हाट आई लाइक टू डू, अगर मुझे सिर्फ वही करना होता जो मैं कर रही हूँ, एंड इट डिडंट ऑलवेज हैव टू बी मी, कि वो मैं नहीं होती जो मैं आज हूँ। और एल्स आई हैड बीन एन एंटीलोप, मैं एक एंटीलोप इज एन एनिमल, ऑफ कोर्स आई कैन बी एन एंटीलोप, अ प्रोंग हॉर्न एंटीलोप। प्रोंग मीन्स जिसके टेंटिकल्स निकले हुए हो, राइट? विद लॉट्स ऑफ अदर एंटीलोप, बहुत सारे एंटीलोप्स के साथ।
skimming like a bird on a wire grass plane. Wire grass plane पे skim करना means moving from one place to another, right? A bounding and bouncing antelope. Bounding means मोड़ तड़ोड़ के bounce करना. You had never get back me to my desk again. और मुझे कभी भी वहां पे नहीं पाते जहां पे मैं आज हूँ, right? और I might be a puma. एक मैं प्यूमा हो सकती हूँ. प्यूमा, course, it's an animal, a cinch colored puma. Cinch color means a very subtle colored puma, right? A sinking sly foot puma जिसके पैर कैसे हो, फिसलन वाले हो. As fierce could be means as brave and ferocious I could be. And I had wait by the water holes के पास. I would have wait over there where antelopes drink, जहाँ पे सारे के सारे antelopes पानी पीते हैं. In the cool of the morning, or I do not think, or सुबह की मॉर्निंग में I would not have think much that ever any antelope could get away from me, कि कोई भी ऐसा एंटीलोप जो मेरे से दूर हो सकता था. Over here the poet, she is trying to compare herself with all those animals, because if she want a human, if she weren't a human, then she would have an animals. That is the reason in all these stanzas she is just describing that how she can be compared. If she would be an puma, she would be an antelope, whatever, right? But if I were a hunter, और अगर मैं एक hunter होती, a red Indian hunter means जो रंगे हाथ पकड़ लेते हैं. I would like to be a hunter, और मैं एक hunter हो सकती थी. I would have a bow made of juniper wood, और मेरे पास क्या होता, एक bow होता, like एक वो तीर कमान होता from a lightning blasted tree. एक बहुत ही ज्यादा चमकते धमकते ट्री से मैं वहां पे शूट करती. एंड आई हैड क्रीप ऑन द प्यूमा asleep, और मैं किसके ऊपर शूट करती, प्यूमा के ऊपर. अ फ्लिंट टिप्ड एरो, और एरो कैसा होता, फ्लिंट टिप्ड एरो मींस एक बिल्कुल शार्प सा एरो. एन ईगल फेदर एरो, और कैसा होता वो, इट इज मेड अप ऑफ एन ईगल का फेदर. और हम प्यूमा किल्स काव्स, और प्यूमा को मार दिया करती, प्यूमा किल्स शीप. मैं प्यूमा को मारती, प्यूमा काव्स को मारता, और प्यूमा किसको फर्दर मारता, शीप को. एंड ही हैड नेवर ईट एनी मोर एंटीलोप, और वो किसी भी एंटीलोप को वापस से नहीं खाता. इफ ही वंस मीट अप विद मी, और अगर वो मुझसे मिला होता. सो ओवर हियर I hope you all understood this poem. This poem was actually where the poetess, she want to be an animal, and this is the simple reason that she's trying to compare herself with all the other animals that she like on her own. So it's my humble request from all of you that please go through all the word meanings, learn all the word meanings, and apart from the word meanings, please do reading, keep doing reading at every day, at least 2 to 3 pages. Just read, and whatever the difficult words that you came across, just write down in your notebooks. It will be very beneficial for you, because if you will be in the habit of reading each and every day, then you will come across several words, and you will see that each and every word is totally interlinked to each and every stanza or a sentence, and these words are quite repeating. बहुत ही ज़्यादा consecutively ये words repeat होते हैं, and this will be very beneficial, solves all the reading comprehensions that you will be solving in each and every part of the exam. And please stay blessed and keep smiling. Thank you.